Assalamu alaikum, I'm Professor Sadaf Munir. Today I've been invited by the Iqbal Academy and I feel immense pleasure being invited here. And I've been invited to deliver a talk or a lecture on Iqbal and Martin Heidegger on time. Quite a few people know here in Pakistan that Iqbal and Martin Heidegger, the pioneer phenomenologist of the Germany in the early 20th century, then I must say that Martin Heidegger was a philosopher who revived and who reinvented and re-explored Aristotle after ages, and say after 25 to 2600 years, and he reinvented and re-explored the question of being and time after Aristotle. So the very metaphysical concepts related to time, related to being, related to God, related to theology, and related to the time as an organic whole, they have been untapped. They were tapped again by Martin Heidegger in Germany and by Iqbal here in South Asia, in India, or say in South Asia. So today I've got the opportunity to talk about both two great philosophers of their time, of the same 20th century. As I told you that they were contemporary to each other. So I'll begin with to shed some light upon what time is. So, the point of my reference is Heidegger's lecture, which he delivered in Marburg University in 1923. So it's a lecture, and the lecture was later transcribed by his students. And through this lecture, he connected time with being in the same manner Iqbal in his Masnavi Asrar-e-Khudi, and in the chapter number 15, जिसको इकबाल ने नाम दिया है वक्तुल सैफ का, उस चैप्टर में और हाइडेगर के इस लेक्चर में which he delivered, as I told you, in University of Marburg in 1923, which was later transcribed. I'll try to draw some similarity and less differences through my lecture. So let's time speak about itself. And here Heidegger quoted his own statement that time should get the opportunity to show itself. So he began with that time, as we all presumed, being a philosophy student, or being a believer of any faith, being a believer of Christianity, or being a believer of Judaism, or being a believer of Islam, we had that prerogative in our mind about time and God, and we consciously or unconsciously try to relate time with God, that time is eternity. Heidegger said that if time is taken as an eternity, then the question of time remains untapped. Time should not be taken as eternity, because when we say eternity, then the time as eternity would go again to the court of theology. तो टाइम का मसला तो फिर हल नहीं होगा ना. टाइम को समझने के लिए we need to see what time is with all its vitality and with all its power. So let's time speak about itself, and let's give time some time to show what time is. तो उसके लिए फिर हाइडेगर ने जो है अपने ही वर्ड्स में, मैं उसके वर्ड्स को कोट करूँगी, वो बताया है that what is of our concern in the 20th century, that how we encounter time, and how we encounter time, how a person of any belief, or a person who doesn't believe in anything, the person who is agnostic or the person who is gnostic, how he encounters time. So वो कहता है कि वो पोजीशन लेगा जो इंसान टाइम के बारे में जानना चाहेगा, जो आम फलसफा पोजीशन लेता है. तो उस पोजीशन के हवाले से हम देखेंगे कि हाउ फिजिसिस्ट एनकाउंटर टाइम. So physicists encounter time by responding back to Einstein. According to Einstein, time is nothing and the space is nothing. What we have is the relative view of time and space. So according to
according to Einstein, that time is just the stretch of the events. Time is just a stretch of the event, and time is a substance. Time is a thing in which events take place. And according to him, space is nothing. Space tells us about nothing. Space is infinite. Space has no limit. And what is our concern with the space is how the matter and energy gets interacted to each other in a specific space. So according to him, there is no absolute time, there is no absolute space. There is a concept of just specific space, a relative space and a relative time. And the relative time is how I am associated with it, how I am related with it, and how the events takes place in it. The events which are of my concern, the events which are not of my concern, I have nothing to do with it. So here Einstein reduced time to a very subjective way, and the time is being comprehended in a very rather highly subjective manner. तो आइंस्टाइन ने न्यूटन का टाइम एज ए लीनियरिटी एंड एन एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट तो वैसे उड़ा के रख दिया था, और हाइडेगर उससे पहले ये पोजीशन ले चुका है कि टाइम कैन नॉट बी टेकन एज एन इटर्नल, बिकॉज इफ़ वी कॉल टाइम एज एन इटर्नल बीइंग देन टाइम वुड बिकम अ क्वेश्चन ऑफ थियोलॉजी. तो उसने ये कहा है कि थियोलॉजी गॉड का कंसर्न नहीं होती, थियोलॉजी इंसान का कंसर्न होती है, क्योंकि थियोलॉजी एक ऐसा मोड है और थियोलॉजी एक ऐसा एक्सपर्टी है जिसमें वी आर मोर कंसर्न विद हाउ अ जीनोस्टिक और एन एग्नोस्टिक पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू गॉड. So we don't need to reduce time to just the content which has something to do with theology. We need to know time as we encounter time, as we go through it, as we run through it, as we pass through it. तो यहाँ से फिर टाइम को हमने आइंस्टाइन की पोजीशन को सामने रख के देखा है. अब जो है अब हम देखते हैं कि to grapple with the concept of time, in a Heideggerian way. So let's explore it further. Let's explore and let's go back to the position which is taken by Einstein, that time being relative and the space being relative. Space उसने कहा था कि space का वो मतलब है कि जब matter and energy when they interact with each other and the space is the something which occupies something in a cosmic ether in which time and energy they are contained. So space is like a container in which the matter and energy they interact. So to go further about it, what do we learn from the clock time? What do we learn from the clock time? Because as I established earlier, according to Heidegger, that time is specific. So by the clock time, we learn that it is something cyclical. Clock is something cyclical. It is homogeneous. It is uniform. And again, clock tells us nothing about time. But the thing that physicists have nothing about time but clock. Clock के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको time बताए. That's why time is a question which triggers science a lot, and that's why time is something which once again revitalized and which once again has reawakened the significance of philosophy. क्योंकि ये माना जाता है, it is widely understood कि फ़लसफ़े की वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती जहाँ पे साइंस आपको तमाम सवालों के जवाब दे देती है. लेकिन टाइम का मौजू जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मौजू है, और इसके अंदर एक ऐसी एब्सर्डिटी भी है, और इसके अंदर एक ऐसी इनहेरेंट कन्फ्यूजन है जिसका साइंस आप अभी तक आपको जवाब नहीं दे सकते. टाइम के बारे में जवाब जो है आपको प्री साइंसिस में मिलता है, प्री साइंसिस हिस्टोरिकल इरा में मिलता है बिफोर 17th सेंचुरी, या फिर आपको टाइम का जवाब 20th सेंचुरी में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रीटैप किया है मार्टिन हाइडेगर ने और इकबाल ने, बिकॉज दे बोथ वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर. So according to Heidegger, what do we learn from the clock time? He said that clock time is homogeneous, it is uniform,
and the clock, in the clock, the tickling of hours and the stretch of the hours and the division of hours later into the minutes and the subdivisions of minutes into seconds, it has been set as some numerical value. It has been set as some numerical value. So in this numerical value, you don't tell, the clock doesn't tell anything new about the time. But the clock becomes significant when the being of ourselves gets related to it. The being of ourself is associated with it. Only then the clock becomes significant. इसके अलावा क्लॉक की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मैंने 8 बजे उठना है, मैंने 11 बजे इकबाल एकेडमी लेक्चर पे पहुंचना है, मैंने आज के दिन ये काम करना है, कल मैंने ये काम सोचा हुआ था, परसों मैं ये करूँगी. और द इंडिपेंडेंस took place and on 14th August 1947. The fall of Dhaka and the fall of Dhaka announced on 16 December 1971. So this 16 December 1971, it tells us nothing. It becomes significance with the frame of reference, with certain frame of reference. अब उस certain frame of reference में एक ख़ास वाक़े की, एक ख़ास इवेंट की सिग्निफिकेंस तब होती है जब उसके साथ इंसान जुड़ता है या बहुत सारे इंसान इज्तमाही तौर पे जुड़ते हैं. I repeat, an event becomes significant, an event becomes historically significant when a person, either on individual or on collective level, associated with it. जब उसका उसके साथ स्टेक होता है तब ही कोई इवेंट जो है हिस्ट्री बनता है. अब जो 16 दिसंबर 1971 की सिग्निफिकेंस है वो क्यूबा, मैक्सिको, अर्जेंटीना या ब्राज़ील के इंसान के लिए नहीं है. जो 14 अगस्त 1947 की सिग्निफिकेंस है वो श्रीलंका, जापान, चाइना, बर्मा या सिंगापुर के इंसान के लिए नहीं है. वो सिग्निफिकेंस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी हद तक बरतानिया के लिए है. तो coming back to the clock gives nothing but the numerical value which is set against some arbitrary standard and which is homogeneous, which is uniform, which has nothing but the division according to the hours, the minutes and the subdivisions into the categories of second. So it is comprised of hours, minutes and seconds. It tells you nothing. Yes, it becomes important when I am related with it, when I have something to do with time, when my existence has something to do with time. So now come to the everydayness of my existence, the everydayness of the existence of Sadaf Munir or the everydayness of the existence of anyone else. तो उसके लिए क्या बात अहम हो जाती है? Now the readiness of the clock, that he is going through it or he is heading towards it or he is pass through it. तो now की अहमियत जो है वो बन जाती है. From now on I am going to start a new business. I have taken a resolution. I have decided from now on, from now till then, from now till then. So our existence is very much related to with the everydayness of the time, now and later. अब ये जो now and later है ये मेरा और हर इंसान का, हर फर्द का अपना अपना होता है, उसके शऊर के साथ होता है. Because now and later ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना. This is something which happens here. So there is a mental event and there is a existential clock as well. There is an existential clock as well जहाँ पे आपका now और later और before जो है वो set होता है. क्लॉक के अंदर कोई लेटर और बिफोर नहीं है, लेकिन लेटर और बिफोर सेट होता है जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं. तो आप कहते हैं कि बिफोर इट और लेटर देन. तो ये यहाँ पे
क्लॉक के साथ हर इंसान ने इज्तमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे एक बहुत शऊरी सा रिश्ता बनाया हुआ, बहुत शऊरी सा रिश्ता जो है बनाया हुआ है। अब ये शऊरी रिश्ता क्या है, अब ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। Let me quote once again from Heidegger. What is this now? What is this now? What is that time when I look at my watch? Is this now at my disposal? And in our being with one another, we would be time, everyone and no one. And do I dispose over the being of time? Or am I myself the now and my existence time? I repeat, am I myself the now and my existence a time? So times becomes myself, times is reduced to my existence, time is reduced to my futural projects, the way I see myself in the past, the way I calculate my present time, and the way I look ahead in my future. I repeat, the way I introspect my past, the way I evaluate my present, and the way I look away in my future. That is subjected to the clock, and that is set with the clock, because for me there is my now, there is my before, there is my later, nothing else. So अब इसके अंदर हमारा नाव और हमारा लम्हा मौजूद एक अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया। अब हमारा नाव, what is this now? What is this now? How can I theorize about my existence? Heidegger, as he was German, and he was a very very racist sort of a German, sort of a person, and a sort of a phenomena. So he used the technical term Dasein, DA-SEIN, Dasein. Dasein mean the self, the spirit, the man. And he further explicated the fundamental yet diversified dimensions of Dasein, and I will breeze through them one by one. So for Dasein, for my existence, for your existence, for the existence of anyone else, we need to explore, we need to know more about it, because as I already said, that time is nothing but the now. Time is nothing but my own self, my own existence, and this is how, and this is the point when Heidegger becomes significant with Iqbal, and Iqbal becomes inseparable from Heidegger. एंड कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक यूनिफाइड बीइंग जो है वो बन चुके हैं. ओनली व्हाट इकबाल डिड इज टू मिस्टिफाई द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आई एंड दिस टाइम. अभी उसमें मैंने असरार खुदी के कुछ मेरे पास अशार हैं. आई विल प्रेजेंट इट बिफोर यू एंड आई विल ट्राई टू इंटरप्रेट इट according to how I took them. So put it in this way, that what is this Dasein? This Dasein is my existence, and on my existence, upon my existence, I have no control. My existence, my वजूद, मेरा यहाँ पे होना is a thrown project. I am just happen to be here. I am just happen to be in this world without my own choice. But the moment I get the consciousness that I exist, then it becomes important. जब मैं इस दुनिया में आ गई हूँ अपनी मर्जी के बगैर, जब मुझे ये कॉन्शियसनेस मिल गई है, जब मैंने उसको गेन कर लिया है कि नाउ आई एम हियर, नाउ आई हैव टू एग्जिस्ट, अब तो जिंदा रहना है, ज़िंदगी को गुजारना है, देन you know, this existence becomes important. So it is, I mean, an very intellectual question, but again it is very basic and it becomes metaphysical. ये एक माबादु तिबियाती सवाल मेरी existence का मेरे लिए बन गया. It is ontological. So Heidegger again retapped which has been untapped before, that what does it mean to exist? जिंदा रहने का या होने का, नॉट जिंदा रहना, होने का मतलब क्या है? सो उसके नज़दीक होने का मतलब इज existence itself, which is an issue for me, because he believes that human beings are the only creature who are very much conscious of their existence, and for them existence is an issue.
The next dimension is temporality. Temporality is I and the you, and the people who have invited me here, they exist in some time continuum. They exist in some temporal, spatio-temporal continuum. They have their own space in which they are there with their matter, and their every act produces some energy that gives some energy. So we are, I mean, the whole package of spatio-temporal object, and we are the manifestation of space-time by ourselves. By ourselves, we are the manifestation of that physics. इंसान अपने बारे में गौर तो करे, वो खुद अपने अंदर एक पूरी की पूरी यूनिवर्स है, because he is there floated, he is a free floated cogito, he is a free floated self who is searching his meaning despite of his religion, despite of his religious belongingness, despite of anything. So I quote here the famous quote from Leslie Hazelton that when it comes to spirituality, when it comes to finding the meaning of our own selves, it becomes immaterial whatever religion we belong to, whatever religion we have been associated with, affiliated with, it becomes immaterial. So we need to revisit, we need to explore what our existence is. Our existence is a throne project. Throne project mean अपनी मर्जी के बगैर पैदा हो गए हैं. लेकिन now with our conscious effort, we are born with certain consciousness. So this very consciousness, which was never been an issue of metaphysics or philosophy ever before Iqbal and of course Martin Heidegger, no one ever questioned, even in philosophy or in psychology, that what does it mean to be, होना किसे कहते हैं, and what does it mean to know, जानना किसे कहते हैं. And for both, the question of fundamental importance is to know ourselves, to know what lies beneath the skin, what lies here, what lies here, by surpassing the identity which is given to us by our society, by surpassing the name which is given to us by someone who is other than ourselves. तो ये othering का होना, othering का, किसी other का होना आपके साथ, लड़ाई तो वहीं से शुरू हो जाती है. सेल्फ की लड़ाई, इंसान की ज़ात की और उसके शऊर की लड़ाई तो वहीं से शुरू हो जाती है जब आपका नाम कोई और रखता है, जब आपको मजहबी पहचान, आपको सोसाइटी में पहचान कोई और देता है, जब आपकी अपनी चॉइस नहीं होती. सो नाउ हेयर द इशू इज़, जो इशू हाइडेगर ने कहा था कि टाइम इज़ एग्जिस्टेंस, टाइम इज़ माई सेल्फ, टाइम इज़ आई, एंड आई माई सेल्फ इज़ टाइम. तो सवाल तो यहाँ से फिर शुरू हो जाता है कि वी नीड टू नो व्हाट लाइज इनसाइड आई, what is that I. So this I, this Dasein mean my existence, your existence, and the existence not on collective level but on individual level. So this is an ontological question. So let me address this ontological question in a possible easiest way, in a jargon free way. So this I is that I exist without my choice, but now as I begin to exist, I need to question what are the limits of my existence. मैंने उसको ज़रूर question करना है कि मेरे ज़िंदा होने की, मेरे होने की limits क्या हैं, मैं किस limit तक जा सकती हूँ, किस limit तक नहीं जा सकती. I have to question my identity, I have to question my social identity, I have to question my gender identity, I have to question my religious belongingness, I have to question everything, and I need to know इसमें मेरा अपना क्या है, इसमें मेरा अपना, इससे शऊरी सतह पे मैंने चीज़ों को कैसे देखा है. तो पहले मैं उस फंडामेंटल पे आऊँगी कि व्हाट डज़ इट मीन टू नो, मैंने कैसे जाना है या मुझे कैसे जानना चाहिए. जब मैं उस जानने को जानना चाहूँगी तभी तो मैं बाकी क्लीशेस को ब्रेक करूँगी. और इसी तरह से हम आके इकबाल के असरार खुदी के 15वें चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 15 विच ही रोट, जो मसनवी उसने सिर्फ वक्त पे लिखी हैं, उसके साथ हम जुड़ जाएंगे. सो Dasein exist in time, he exists in some temporality, I exist in a spatio-temporal continuum. Here
by falling back upon Einstein, that space and time. तो यहाँ पे अब मेरी स्पेस एंड टाइम है. मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ अहम है कि मैं किस वक्त के धारे के अंदर मैं ज़िंदा हूँ, जिसमें मैं रह रही हूँ, जिसमें मैं अपने लिए फ्यूचरल पॉसिबिलिटीज़ को तलाश कर रही हूँ, और जिसमें आई माई सेल्फ, माई वजूद, माई एग्जिस्टेंस मैटर्स एंड इट मैटर्स विद एनर्जी. और किस तरह से मेरा हर अमल कायनात में होने वाले तगय्युरात में, कायनात में होने वाली तब्दीलियों में, my material presence and my energy is contributing its part, is giving its bit in this whole system of universe, in this whole system of cause and effect which is causally connected to each other, जिसमें हमारा ये मानना है मुसलमान होने के तौर पे भी कि हर अमल अपना रद्द अमल साथ लेके आता है. तो यहाँ पे my spatio temporal continuum, जिसको temporality का नाम दिया, then there is death, there is being towards death, there is care, there is concern, there is authenticity. Authenticity means that I am a unique being. Here my conscious mental process is here with all its randomness, and here I can make myself different. Of course I am different from the rest of the world. Apart from that biological and socio and ethnic and class homogeneity which we shared all together, which is we are having, I am having my shared presence, I am having my shared past, and I could have my shared future. लेकिन उसके बावजूद एक आपके इंसान के अपने होने की एक एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी के वो एक ही है दुनिया में, वो एक ही है, और एक उसकी यूनिकनेस, इट डज मैटर. So now this is all from my side on Heidegger, as he already claimed, and as we take it, that time is self, time is I, time is existence, time is my absolutely singular existence, जिसमें मेरे लिए मेरा होना मैटर करता है. क्लॉक भी जो है उसके साथ, क्लॉक तभी अहम होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, जब आप अपना उसके साथ नाउ, लेटर और बिफोर का रिश्ता बनाते हैं. और क्लॉक कलेक्टिवली भी तभी सिग्निफिकेंट होती है जब उसके साथ आपका कोई स्टेक, आपका कोई सक्सेस, आपका कोई फेलियर, आपकी हिस्टोरिसिटी जुड़ी होती है. ओनली देन clock and history become significance with your historicity. Now I'm going to recite some couplets from the Masnavi Israr-e-Khudi, chapter number 15, and which is on time. So let me start with the first. रफ्ताओ आइंदा दरे मौजूदे ऊ, दीराओ आसूदा अंदर सूदे ऊ, वक्त माँ को अव्वलो आखिर नदीद, अस ख़याबाने ज़मीरे मादमीद, मर्दे हुर खुद राज गुल बर मी कुनात, ख्वेशरा बर रोज़ गारा मी तुनात. इसका मतलब ये है कि बंदा ज़ात अपने आप को मादे की बंदिशों से ऊपर ले जाता है और वो तकदीर का और गर्दिशों का, ज़माने की गर्दिश का कफन अपने ऊपर नहीं लपेटता. आई रिपीट, मर्दे हुर खुद रा अज गुल बर मी कुनात, ख्वेशरा बर रोज़ गारा मी तुनात. बंदा आज़ाद अपने आप को मैटर की बंदिशों से ऊपर ले जाता है और वो अपने ऊपर तकदीर का या फेट का कफन नहीं लपेटता. इसके अलावा मर्दे हुर की हिम्मत तकदीर की मशीर बन जाती है और तकदीर जो कुछ करती है उससे पूछ कर करती है. इसी को इकबाल ने बांगे दरा में भी ऐसे कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, या लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब. और इसके अलावा और जो उनकी उर्दू कलाम में जो आपको शायरी मिलती है ज़्यादा, उसमें सेल्फ़ का, खुदी का जो है ज़िक्र है. अब यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दूसरे अशार जो हैं पढ़े हैं, स्पेशली ये वक्त माँ को अव्वलो आखिर नदीद, अस ख़याबाने ज़मीर मादमीद. इसका मतलब ये है कि वक्त जो है उसका अव्वलो आखिर नहीं है. यू कैन फाइंड टाइम इन द
deep abyss of your own self. You scratch yourself, you go inside you, you just try to learn yourself by knowing all the laws and the rules associated with 20th century phenomenology, 20वीं सदी में जर्मनी में, फ्रांस में. और ये एक लहर आई थी शऊर की, ये एक नई लहर थी जिसने बहुत से फ़लसफ़ों को जन्म दिया. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़लसफ़ा जो था वो ये था द ऑन्टोलॉजिकल रीथिंकिंग ऑफ बीइंग. एंड व्हेन द सेल्फ इन द 20th century, self becomes more important, self became highlighted, self became popped up पूरी दुनिया में. क्योंकि उससे पहले साइंस की वजह से, तहज़ीब की वजह से, सिविलाइजेशंस की वजह से और दुनिया में होने वाली बहुत तरक्की का उन्होंने जिसे कहते हैं कि क्लाइमेक्स फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की सूरत में इंसान ने देख लिया था. सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन इन 20th century, the intelligentsia and the intellectual world of the Germany and the intellectual world of the continental Europe, they fully realized that only man is something which is of some significance, and man should be the object of inquiry. It is always the knower who should matter, and for man his existence matters, nothing else matters. No civilization matters, no codes of civilization matter, nothing matters which has inherited which he inherited in the name of modernity and romanticism and in the name of humanism. Nothing mattered. What matters for him is his own existence. तो अब वक्त जो है वो इंसान है, वक्त जो है उसका ज़मीर है, वक्त जो है उसके अंदर की आवाज़ है. जैसे कि इन अशार से जो है बताया है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है. इस हवाले से दो आखिरी अशार जो है वो मैं पढ़ूँगी और उसके बाद इस डिबेट को वाइंड अप करूँगी. अहद चूँ तार बदाम सुबह शाम, लज़्ज़त परवाज़ बरजांश हराम. अब्दे चूँ तायर बदाम सुबह शाम, लज़्ज़त परवाज़ बरजांश हराम. इसका मतलब ये है कि जो गुलाम होता है ना, वो सुबह शाम के वो टाइम के चक्कर में फंस जाता है. गुलाम, द वन हु डजंट नो अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, द मैन who doesn't freed himself, the man who doesn't liberate himself. एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को आज़ाद नहीं किया, जो अपनी खुदी तक नहीं पहुंचा, जो अपने सेल्फ तक नहीं पहुंचा, वो इंसान जो है वो गुलाम है. एंड ही बिकम्स द कैप्टिव ऑफ टाइम. वो ऐसे ही है जिसके लिए उसने एनालॉजी, इकबाल ने एनालॉजी, उन्होंने एनालॉजी इस्तेमाल की है कि जैसे परिंदा किसी शिकारी के जाल में फंस जाए. एक उस गुलाम इंसान को ऐसा इंसान का है और वो इसी तरह से वक्त के दाम में उलझ जाता है, वक्त के दाम में फंस जाता है. ऑन दी अदर हैंड द पर्सन who knows about himself and who knows that I am the one who rules the time and for me time is nothing. जो present past future, जो इन वरीज से अपने आप को above कर लेता है, इनसे ऊपर कर लेता है, जो अपने आप को old और young में segregate नहीं करता, जो इन तमाम segregation से, जो इन तमाम dichotomy से, इन तमाम बंदिशों से, वक्त की बंदिश से कि वो बूढ़ा है, अब कभी वो जवान था, अब वो बूढ़ा हो गया है, उसने वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया. जो इंसान इन मटीरियल वरीज से अपने आप को ऊपर कर लेता है, इनसे ट्रांसेंड कर लेता है, वो वक्त को रूल करता है. और उसी के लिए इकबाल ने शायद कहा, ये इन मसनवी के इन अशार से भी मैंने साबित करने की कोशिश की है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या. एंड इकबाल पुट इट फिलोसॉफिकली इन दिस वे दैट एवरी ह्यूमन बीइंग should try to reach at the stage and to bring his existence to that level where he could equate his potentialities with actualities. वो इंसान वो बन जाए जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया था. मतलब उसकी जितनी सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं उसके अंदर, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर पोटेंशियली ह्यूमन. इसका मतलब ये है कि इंसान को इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एक मॉरल एजेंट बनने के लिए, एक सन बनने के लिए, आफताब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो व्हाट इज़ द एम ऑफ खुदी? लेट मी सम इट अप. व्हाट इज़ द एम ऑफ दासाइन? दासाइन मीन माई एग्जिस्टेंस बीइंग इन द वर्ल्ड, दैट आई एम बीइंग इन द वर्ल्ड, फेसिंग ऑल द चैलेंजेस and try to combat all the restrictions
and try to surpass all those obstructions and try to combat with everything which comes in my way to actualize all my potentialities. अपनी उन सब जितनी potential मेरे अंदर मौजूद है, जब मैं उसको actualize कर लूँगी, जब उसको सामने लेके आ जाऊँगी, तो फिर तकदीर सिर्फ मेरे हाथ का खिलौना होगी, तकदीर सिर्फ मेरी जुम्बिश अबरू की मोहताज होगी. So I end up my lecture here with this note, and again I quote another quote of Iqbal, that time is an organic whole, it is eternal now, it is fate, and the fate means you have to conquer the fate by fully actualizing your all hidden potentialities. तो इस level पे आके does sign and ego, the self and the khudi, they becomes unified. Thank you so much.